Hello guys and welcome back to the ACD series. Today we are going to add a new dimensionality on our segment trees. Let's make our concepts crystal clear. So in this playlist of range queries, we are done with our 1D segment tree section completely. So हमने point updates range queries, range updates point queries, range updates range queries and the general version of all of these, polynomial updates and range queries. We are done with the entire 1D section now. We are moving ahead with the 2D section of segment trees. How do we add another dimensionality on our segment trees and how do we deal with 2D arrays? So let's begin with this. So 2D segment trees में हम क्या करने वाले हैं? We are going to add segment trees inside the segment trees. Essentially what we mean? Each node in the segment tree is itself a segment tree. So basically अगर आपको याद हो, what was segment tree? Segment tree was a binary tree, a complete binary tree wherein the leaf nodes were representing my array elements and the other nodes had the data structures or kind of like values which are required for processing the range queries, correct? अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो segment trees के nodes होने वाले हैं, those nodes themselves are going to be segment trees in themselves. So basically it's kind of a 2D structure. In one dimensionality, we're going to have a whole segment tree, the big segment tree, and in the other dimensionality, every node inside my segment tree is also a segment tree. So let's look ahead कि 2D segment trees होती क्या है, why do we actually need them, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, and when do we need to use it. So before that, I would like to recall you prefix array. If you remember prefix array क्या होता है? So given a one dimensional array, उसका हम एक prefix array बनाते हैं in order to find the static range queries in big O of 1. So किसी भी सब array का अगर मुझे sum निकालना है, so big O of 1 में I'm able to find it using the prefix array. But when there is a two-dimensional array, right? So 2D array के लिए we transform the idea of prefix array into 2D prefix array. So we have done this in PIP series. We create something called a 2D prefix array, which helps us in finding the sum of any rectangular subarray region in my 2D subarray. So for example, this is my 2D subarray and any rectangular, इसका मुझे sum निकालना है. So in big O of 1, किसी भी subarray का inside में 2D subarray, how to find sum using 2D prefix array, right? So ये हमने स्टैटिक रेंज क्वेरीज में इसकी बात करी थी. एंड देन जब हम डायनेमिक रेंज क्वेरीज में गए थे, सो वी सेड कि प्रीफिक्स अरे के कॉन्सेप्ट को हम सेगमेंट ट्रीज के यूज से कर सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू गेट द सम ऑफ एनी सब अरे इनसाइड माय अरे इन बिग ऑफ लॉग एंड टाइम व्हेन आवर रेंज क्वेरीज आर डायनेमिक, सो अरे वैल्यूज आर इटसेल्फ चेंजिंग, सो हमने सेगमेंट ट्रीज लाई थी. नाउ इन अ वेरी सिमिलर वे हम सेगमेंट ट्रीज के कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे टू 2D सेगमेंट ट्रीज. This is in effect with 2D prefix array. So दोनों की जो concept से they are very much similar, right? So let's see how 2D segment trees are built and where are they required. So let's take an example of a 2D array. So this is my 2D array given to me. अब इस 2D array में there are two queries. So these are my two different kind of queries I need to handle. The first kind of query is update any value aij. See, अगर ये update वाली query नहीं होती, instead of this had I been having only this kind of query, find the sum of values in the subarray. So कोई भी subarray given होगा, let's say this rectangular region, this is my subarray, और इसका मुझे sum find करना है. So I already know कि I can find this sum in big O of 1 time using my 2D prefix array. But instead of this, there is one more query which is added to this, updation. So basically मेरा array की values जो हैं, those values are themselves going to change. Let's say 7 जो अभी है वो बाद में कभी 9 बन जाएगा, ये 6 जो है वो 7 बन जाएगा. So there are updates going on my array. Therefore it's a dynamic range query. और जब ये मेरा array dynamic है, then if someone asks me to find the sum of any rectangular subarray region, how am I going to do that? For this we require something called 2D segment trees. Segment trees के अंदर हम कैसे segment trees को build करेंगे? Let's look at that. So we'll now be building the 2D segment tree step by step. So 2D segment tree build करने के लिए, look at this. We need to separate the rows and columns, and we have to create a segment tree for each row. What does this mean? Okay, so look here. This is my 2D array. अब इस 2D array में मुझे क्या करना है? So there are 4 rows in it, and there are 4 columns in this 2D array. I need to process queries of the form updation of any value inside the 2D subarray and sum of any subarray of my 2D array, right? So इस sum को निकालना है and I need to update the values as well. So in order to do that, सबसे पहले मैं क्या करूंगा?
I'll separate these rows one by one. So this is my row number 1, this is row number 2. I'll separate each rows. And for every row, I'll create a segment tree. Now see, मुझे चूंकि अभी sum निकालना है, I need to calculate the sum of any sub-array rectangular region. मुझे इसका क्या निकालना है? Sum. So I need to process sum queries. तो मेरा operation जो यहाँ होने वाला है, that is going to be sum. Therefore, I'm going to build the segment tree over my sum operation. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? R1. सो मैं रो 1 को लूंगा. सो 7 6 1 6, दिस इज माई रो 1. और इस रो के ऊपर आई हैव बिल्ड अ सेगमेंट ट्री. सो बेसिकली n इक्वल्स टू 4 है. सो मैंने इन दो 7 प्लस 6 किया तो आई गॉट 13, 1 प्लस 6 किया आई गॉट 7, एंड देन फाइनली 13 प्लस 7 किया सो आई गॉट 20. सो ऐसे करके मैंने रो 1 के लिए एक सेगमेंट ट्री बना ली. सिमिलरली मैं रो 2 को अलग लूंगा, 8 7 5 2, एंड उसके लिए एक दूसरी सेगमेंट ट्री बना लूंगा. So I have created now segment trees for each row. Columns into the consideration. अभी मैंने क्या किया? मैंने सारे रोज को एक एक करके अलग किया और उन सारे रोज के लिए एक एक सेगमेंट ट्रीज बना ली हैं. अब मुझे क्या करना है? मेरे कॉलम्स को भी अपने सेगमेंट ट्रीज में बिल्ड करना है. अब कॉलम्स को हम कैसे करेंगे? So I am going to combine these rows one by one. So look at this. मैं क्या करूंगा? मेरे सबसे पहले सेगमेंट ट्री के जो नोड है, आई एम गोइंग टू चेंज दैट नोड डेटा स्ट्रक्चर. So if you remember the entire history, सबसे पहले हमने नोड में क्या रखा था? We used to have a value inside my node. फिर वैल्यू में I said कि एक lazy tag को डालना पड़ेगा in order to for having lazy propagation. Then हमने multiple lazies डाला, multiple for multiple range query updates. After that we put zi's in my node for the polynomial updates. अब हम क्या करेंगे? पूरे नोड की डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे completely. There has to be no value, no lazy, nothing inside it. Inside my node I'm going to have a complete segment tree itself. So node के अंदर मेरा एक complete segment tree होगा. And what is segment tree? We already know. We represent a segment tree using an array, right? So एक tree array, complete tree array data structure has to be inside my node. So a segment tree inside a node. Then we need to define something called a plus operation. Now what is this plus operation? This plus operation is over the segment tree data structures. So this is combine the segment tree together to build a 2D segment tree. So basically what I'm doing is this plus st, I'm defining this operation. So it will take a node. You can think of it, this plus st as a function from node, cross node to node. And what is inside the node? A segment tree, right? So what it says, it will take a segment tree si, it will operate that with sj, and it will form a new segment tree sk. So we are actually defining a new operation plus over segment trees. मैं क्या करूंगा? एक segment tree को लूंगा, दूसरे segment tree को लूंगा, दोनों को plus कर दूंगा. That is how we are defining our operation. See, into भी कर सकते हैं, divide कर सकते हैं, anything. This is just a definition, right? And the output would be a new segment tree, which is the operated value of these two segment trees. Let's see how we are doing that. So let me define this st operation now firstly. So plus st क्या करेगा? It will take two nodes. So it will take let's say R1 and R2. अब nodes के अंदर क्या है? Nodes के अंदर है segment trees. So this is my segment tree number 1, segment tree number 2. And it will create a new node. For example, let's say I name it R12. And उस node के अंदर क्या होगा? A new segment tree. And for each element inside the segment tree, for example, let's say if you pick up this element, this node of the inside segment tree is nothing but the sum of 7 plus 7. So 7 plus 7 would give us 14. Similarly, 7 plus 8 would give us 15. So basically मैं क्या कर रहा हूँ? I'm taking the row 1, I'm taking the row 2, I'm adding each element column wise. So 7, 8 को sum कर दिया, I got 15. 6, 7 को sum कर दिया, I got 13. So I got a new row kind of structure, which is, I call it R12. What is R12? R12 is, so this is my R1, this is my R2, this entire is my R12. So मैं क्या करूँगा? Column wise elements को add up कर दूंगा. So I'll get a new row kind of structure called as R12. And on the top of this R12, I've built a new segment tree. This is my R12 node. So plus st क्या करता है? It takes two rows, just add those rows together column wise and create a new row kind of structure and create a segment tree on top of it. This is my plus st operation. Using this plus st operation, सबसे पहले मैंने क्या किया? R1, R2, R3, R4 इन चारों नोड्स के लिए चार अलग अलग segment trees बनाए. Those are going to be my leaf nodes. अब मैं उन सारे leaf nodes को लूंगा and in a very similar way
how I build up the segment tree. So हमने क्या किया, this insider segment tree, this segment tree is built with the sum operation. Then after that I am building this bigger segment tree, the outside segment tree, using the plus st operation. So basically मैंने क्या किया है, मैंने एक नई algebraic structure plus st define करी है, and I'm creating this bigger segment tree using that plus st operation. And what is the identity of that plus st operation then? Yeah, you must be asking about the identity. So plus st की identity हो जाएगी a segment tree itself. So it is a segment tree such that every node inside that is 0. So this is the identity element of my plus st operation. So using this plus st operation with this identity element, I have created a bigger segment tree structure like this. So R1 R2 मिलके क्या बना है, R12, R3 R4 मिलके क्या बना है, R34. So what is R34? Basically take the R3 row, take the R4 row and club those two row column wise. So column wise में क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, column wise elements को ऐड कर दो, so they'll sum up. So I would get, see 8 plus 3 is 11, 9, 14, this would give it 10 and this would give it 9. So I've got a new row kind of structure which is the club of these two guys, right? अब ये जो मुझे नया स्ट्रक्चर मिला है, दिस रो स्ट्रक्चर, इसको यहां पर डालो और उस पर एक सेगमेंट बिल्ड कर दो यूजिंग दी सम ऑपरेशन. दैट इज माय R34. फाइनली मैं क्या करूंगा, R12 को एंड R34 को, दोज आर आल्सो टू नोड्स, राइट, टू नोड्स इनसाइड ऑफ व्हिच आर सेगमेंटरीज, उन दोनों को भी मैं अगेन प्लस st से बिल्ड कर दूंगा बिकॉज this is also a node of segmentary, this is also a node of segmentary, so it will give me a new node of segmentary. Let's name it R1234. So R1234 actually क्या बता रहा है, see take all the four rows together, sum these column wise. So column wise elements का मैं ऐसे sum कर दूंगा, I would get a new structure like this which is 26, 27, 16 and 17. एंड उस न्यू R1234 रो के ऊपर मैं एक सेगमेंट्री बिल्ड कर दूंगा यूजिंग माय सम ऑपरेशन. सो आई वुड गेट अ न्यू नोड R1234 इन माय सेगमेंट्री. दिस इज गोइंग टू बी माय रूट नोड ऑफ माय बिगर सेगमेंट्री, राइट. सो जस्ट टू गिव अप द डिटेल्स वंस अगेन, जो नोड्स के अंदर की सेगमेंट्रीज हैं, दोज आर बिल्ड अपॉन द सम ऑपरेशन which is my basic ideal, the algebraic expression which we already use, right. The bigger segmentary is built upon the plus st operation. This is not general ones, we have defined it. So use the defined operation जिसकी identity element is a node inside which a segmentary is there and every element of the segmentary is 0. So it is filled completely with 0. Fine. So हमने क्या किया, just to recap very quickly, we were given a 2D array. हमने उस 2D array को rows and columns में बांटने की कोशिश की. ईच रो के लिए हमने एक सेगमेंट्री बनाई. सो वी क्रिएटेड अ सेगमेंट्री फॉर ईच नोड, दोज वेंट टू माय लीफ नोड्स. देन मैंने दो की पेयर अप की, इन दो को पेयर अप किया, इन दो को पेयर अप किया एंड आई क्रिएटेड मोर नोड्स ऑफ माय सेगमेंट्री एंड देन आई पेयर्ड अप एवरीथिंग कॉलम वाइज. सो मैं कॉलम वाइज सम करके पेयर अप किया एंड बेसिकली आई एडेड ऑल दीज फोर नोड्स टुगेदर टू गेट अ न्यू सेगमेंट्री. In that way, I created a bigger segmentary using a user-defined operation called plus st. You could have named it something else, right? So हमने node की structure change कर ली. Inside my node now a segmentary complete is present, right? So and we defined a plus st operation over my node cross node, and then we defined the identity of the plus st, and we got our new segmentary which is a bigger segmentary. Segmentary अब 2D segmentary बनाना कैसे, we are done with that. बट हाउ डू वी एक्चुअली यूज दिस बिगर 2D सेगमेंट्री, राइट. उसको यूज करके हमें जो दो ऑपरेशंस करने हैं, सो दीज आर द टू क्वेरीज वी नीड टू हैंडल, राइट. अपडेट एनी वैल्यू aij एंड देन फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज इन द सब अरे. इन दो ऑपरेशंस को हम in good amount of time, how are we going to do that using our 2D segmentary which we have built right now. So let's see हाउ डू वी क्वेरी समथिंग, राइट. सो कोई भी क्वेरी करनी हो, सो ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी बिल्ड किया है, हाउ डू वी एक्चुअली क्वेरी इट यूजिंग दैट. सो फॉर एग्जांपल मुझे क्वेरी करने को बोला फ्रॉम द 11,33. सो दिस सेल इज माय 1,1,1,1. इफ आई स्टार्ट विद दिस इज 0,0, सो दिस सेल वुड बिकम माय 1,1 सेल एंड दिस सेल वुड बिकम माय 3,3 सेल. सो मुझे क्वेरी आया कि फाइंड द सम ऑफ
the subarray formed by this 1 1 cell and 3 3 cell as diagonal elements. So I got this subarray. अब मुझे इसका सम निकालना है. See, obviously big O of n into m में आप ये सम तो तुरंत निकाल सकते हैं. The idea is to create this sum in lesser amount of time, right? So look at this. In order to do this operation, you'll start from the node itself. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ये subarray given है. We are going to divide this subarray in rows and columns separately. So let me draw it over here. So what I'll be doing is I'll be separating the rows and columns. So I've got a row, or rather a subarray of the row 7 5 2, then a subarray of the row 9 7 1, and a subarray of the row 5 3 8. Now what I can do, so in the segment tree हम क्या कर सकते हैं, if you can see कि row 3 and row 4, see this is a subarray of the row 2, this is subarray of the row 3, this is subarray of the row 4, and row 3 and row 4 की वैल्यू अगर हमें क्वेरी करनी होती है तो हम एक्चुअली रो 3 और 4 से अलग अलग जाके क्वेरी नहीं करेंगे, विल कंबाइन देम एंड विल क्वेरी डायरेक्टली फ्रॉम रो 3 4. इसलिए तो हम सेगमेंट ट्री बिल्ड करते हैं, राइट? सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू क्वेरी फ्रॉम दिस द सम ऑफ दीज टू, राइट? सो कॉलम वाइज में सम कर दूंगा इनका. कॉलम वाइज सम क्या हो जाएगा, 9 plus 5 would give me 14 10 and 9. So now I've got two rows with me. What are the two rows? 7 5 2 which is my R2, and 14 10 and 9 which is R3 4. अब R2 और R3 4 इन दोनों से मुझे क्वेरीज करनी है. So this is my node R2, this is my node R3 4. I need to query from these two nodes. See, essentially I had to actually query from R2 R3 and R4, but R3 और R4 को query करने से अच्छा उनका जो प्लस करके मैंने R3 4 नया नोड बनाया है, it's better to query it from there, since I have to break the entire number of rows into log and many rows, right? So log and many rows में तोड़ने के लिए I have to pick up only log and many nodes from a segment tree. So therefore I am picking up this R2 and I am picking up this R3 4. अब R2 में भी I only have to pick 7 5 and 2. 8 has to be excluded. So basically मैं क्या करूंगा, I'll pick up this 7 from the R2, this 7 from the R2. So R2 के अंदर के सेगमेंट्री से I'll pick up these two guys. इससे क्या होगा, मेरे 7 5 2 ये जो रो है इसका सब निकल जाएगा, and this would give me 14. Similarly, essentially I had to pick up 9 7 1 and 5 3 8, but instead of that I am picking up 14 10 and 9. So essentially I'd pick 14 from R3 4 and 19 from R3 4. So finally this would output a 14 from here, and this is going to output a 29 and 33. So it will output a 33. So the query will, so I'll get from R2 14 value and from R3 4 33, and finally I'll sum these two values together in order to get, so I'd sum up these two values, and then finally the final answer is going to be 47. I hope this was making sense. So मैंने क्या किया, finally मैंने सबसे पहले rows को check किया. See, मेरे जो query थी it was including row number 2, row number 3 and row number 4. So I had included 3 rows in myself. So उन rows को मैंने segment trees के nodes में पहले divide किया. I was requiring row 2. So row 2 का pairing किसके साथ होता है, R1 के साथ, which is not currently in my subarray. So मैंने उसको pair up नहीं किया. R2 was left alone. R3 की pairing up R4 के साथ होती है segment tree में, if you remember, right? So pairing वाला concept जो हमने segment tree में सीखा था. So R3 is paired up with R4. Therefore इन दोनों rows को अलग अलग क्वेरी करने से अच्छा मैं इन दोनों के एक कंबाइंड रो के साथ क्वेरी करने वाला हूं. सो आई एम क्वेरिंग R3 4. अब R2 एंड R3 4 ये दो नोड्स मुझे मिल गए. अब इन नोड्स के अंदर भी आई डोंट वांट ऑल द कॉलम्स. सबसे पहले हमने रो देखा, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द कॉलम्स. व्हाट आर द कॉलम्स आई नीड? आई ओनली नीड C2 C3 C4. C1 is something which I have to leave, right? So basically this guy has to be left. This is C1. I have to leave this guy. So I only chose these two nodes representing my column number 2 and a combination of column number 3 and column number 4. So मैंने यहां से ये दो nodes उठाए, यहां से ये दो nodes उठाए, and finally जब query करेंगे तो it will return a 14 to its parent, it will return a 33 to its parent,
then this will return 40 from here, 33 from here, and finally जो query होगी, the final answer would be a sum of these two. So 14 और 33 आंसर होके 47 मुझे मिल जाएगा. करेक्ट. सो एसेंशियली हमने किया क्या है, हमने ये जो सब अरे है, दिस इंटायर सब अरे विच 1 1 एंड 3 3 वाली जो सब अरे है, इस सब अरे को हमने 4 डिस्टिंक्ट सब अरेज में तोड़ दिया. द फर्स्ट सब अरे वाज दिस गाय, दिस वन, द नेक्स्ट सब अरे वाज दिस गाय 5 + 2. उसके बाद द नेक्स्ट सब अरे वाज दिस इंटायर गाय 9 and 5 together. And the last subarray was these 4 guys 7 1 3 and 8. तो बेसिकली मैंने क्या, मेरे इंटायर सबअरे को 4 सेक्शंस में तोड़ दिया, 7 5 2 9 5 एंड 7 1 3 8. इन 4 सेक्शंस की वैल्यूज को मैंने 4 डिस्टिंक्ट नोड से उठाया. सो 7 की वैल्यू को मैंने ये वाले नोड से उठाया, देन 5 + 2 टुगेदर, ये 5 + 2 है, इनका सम को मैंने ये वाले नोड से उठाया. 9 + 5 टुगेदर, इनके सम को मैंने ये 14 वाले नोड से उठाया. एंड 7 1 3 एंड 8 टोटल इज 19, इसके सम को मैंने ये वाले नोड से उठाया. सो बेसिकली मैंने 4 सेक्शंस में तोड़ा और 4 नोड्स की वैल्यूज को उठाया और आपस में उनका सम कर दिया इन ऑर्डर टू गेट द इंटायर सम ऑफ माई सब अरे. दिस इज हाउ आई डिवाइडेड माई इंटायर सब अरे इनटू लॉग एंड मेनी. सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉग एंड मेनी रोज में डिवाइड किया एंड इनसाइड ईच रो लॉग एंड मेनी कॉलम्स में डिवाइड किया. सो बेसिकली जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे सो ये एनकाउंटर कि इट्स अ लॉग स्क्वायर एंड कॉम्प्लेक्सिटी. विल सी दैट अहेड, राइट? बट बिफोर सीइंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, देयर इज वन थिंग, हाउ डू वी अपडेट, राइट? हमने क्वेरी देख लिया कि हाउ इन ऑर्डर टू यूज अ 2D सेगमेंट्री हम कैसे अपडेट करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू सी कि 2D सेगमेंट्री यूज करके हम कैसे अपडेट्स करते हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अपडेट दिस वैल्यू 5. तो लेट्स से 5 को मुझे किसी x में अपडेट करना है. In order to update this, if you remember the updates from the segmentary वाला section, we need to update every node which is affected by this particular node. So अगर इस 5 की वैल्यू को मैं 7 कर दूंगा, so what are all the nodes in my segmentary which are getting affected? So again, in order to analyze that, we'll convert this into rows and columns separately. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी 2D अरे को हम रोज में बांट देंगे. सो आई हैव गॉट R1 R2 R3 R4. देन रोज को कंबाइन कर देंगे. सो R12 R3 4 एंड R12 3 4. नाउ इफ आई चेंज दिस 5, what are the rows or what are the rows from this, what are the sections from this which are getting affected? So obviously this R2 is getting affected, right? So because 5 is changed, so R2 itself is getting affected. But R12, if R2 will get affected, R12 will also get affected because R12 कैसे बना है, R1 और R2 के प्लस ST के ऑपरेशन से R12 बना है. So R2 is getting affected, R12 is getting affected. But अगर R12 get affect होगा, so R1234 is also going to be affected because R1234 कैसे बना है, R12 और R34 के प्लस ST ऑपरेशन करने से बना है. Therefore, अगर हम रोज की बात करें, so there are 3 row sections which are getting affected. अगर हम सेगमेंट्री की बात करें, so this node is getting affected because of R2. R12 वाली node is getting affected because of R2 itself, and R1234 node is getting affected because of R12. So basically अगर हम if you remember कि अपडेट्स कैसे करते हैं, तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं and a path to the leaf node which is getting affected. All those the nodes which are coming in the entire path, those nodes get affected. So this and this. So ये हमारी रो की बात हो गई. After the rows, let's talk about the columns. What are the columns getting affected? So basically मैंने 3 rows की बात करी and in those 3 rows तीनों में ही there are set of columns which are getting affected. So see, C3 is getting affected for sure because मैं obviously C3 में change कर रहा हूं. If C3 gets affected, C34 will also get affected because C34 कैसे बना है, C3 और C4 के प्लस ऑपरेशन से C4 बना, राइट? और यहां पर कौन सा ऑपरेशन चल रहा था, प्लस ST ऑपरेशन, एंड द ऑपरेशन हियर इज अ प्लस ऑपरेशन. जस्ट कीप दैट डिफरेंस इन माइंड. सो C3 अफेक्ट हुआ, C34 अफेक्ट हुआ, एंड सिमिलरली C1 2 3 4 विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. सो अगर मैं कॉलम वाले विच इज segmentary inside my each node उसकी बात करूं, so there are 3 nodes which are getting affected. So finally in my 2D segmentary
अगर मैं आउटर डिमेंशन में देखूं, so 3 nodes are getting affected and inside each one of them 3 nodes are getting affected. So basically this C3, this guy and this guy inside this row, then again this guy entire inside R12, and this guy entire inside R2. These 9 nodes are actually going to be affected. So let's do an update operation. So let's say मैंने 5 को क्या कर दिया, +2 कर दिया. So I did a +2 on 5 to make it 7. So सबसे पहला अपडेट क्या होगा, this 5 is going to be changed to 7. So यहाँ +2 हुआ, so ये 7 में भी +2 हो जाएगा and 22 में भी +2 हो जाएगा. So similarly क्या होगा, ये 6 जो है, this 6 is going to be changed by +2, so it will become 8. This will be +2 and this will be +2. And finally ये जो 16 दिख रहा है आपको, which represents the sum of the entire C3 column, इसमें भी +2 हो जाएगा, 33 में भी +2 हो जाएगा and 86 में भी +2 हो जाएगा. Finally, so there are log n many rows which are getting affected. So basically there are log n many rows in the bigger segment tree, and inside each one of them there are log n many nodes corresponding to the columns. So log n into log n, again we are seeing a complexity of log square n. So there are log square n nodes which are getting affected. Right, so with this we are in a position to look at the time and the space complexity. So हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, रेंज क्वेरी एंड पॉइंट अपडेट दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log square n होगी. Why? This is because in both of them we are encountering log n many rows. हम log n many rows को encounter करते हैं and inside each row we convert it into log n many columns. So log n many rows को फिर log n many, and each row is converted to log n many columns. So there is a log square n complexity in both the query and the update. So log square n जब भी आ जाता है you need to take care, right? Because 5000 approx अगर आप चलाओगे so log square n is going to work, but bigger n 10^5 10^6 वगैरह आप चलाओगे so log square n might be giving you some issues. So just take care of the complexity that it is not log n but log square n. Important thing over here is the space complexity. Try to understand this. If you look at our segment tree itself, the segment tree is having 2n many nodes, right? So ये total number of nodes, these nodes if you count, these are 2n many, right? Because the number of rows is n, so the number of nodes in my bigger segment tree is 2n. But inside each node I have a segment tree itself, and what is its space complexity? So इस segment tree की बात करूं, so there are total n number of columns. So columns की width क्या है, n. So therefore the number of nodes in my segment tree is twice of n. And so there are 2n many nodes here, 2n many nodes here, all the way up till 2n many rows. So basically 2n into 2n. So I am getting a 4n square, which is big O of n square space complexity. Right? So time complexity क्या हो जाएगी, log square n, and space complexity हो जाएगी big O of n square. This needs to be really taken care of, because अगर n की वैल्यू 10^5 होगी then you won't be able to do this question in the space complexity provided. With this, in the next video we are going to see a CSS problem set on this 2D segment tree and how do we actually code and implement the segment trees in the VS Code itself. We hope you liked this video and it was able to add some value to your DSA and coding journey. Do hit the like and the subscribe button, and see you again.